हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे कनेक्ट। हमारी एडवेंचर विमेन इंडिया के इस शो में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएं या who have done something inspiring, something that you can learn from. And my ex-colleague, but I will not say my former friend, just a former colleague, my friend, colleague, and she's done something which was actually needed. तो हम आपकी मुलाकात उनसे कराने वाले हैं, तो देखते हैं आज का संडे कनेक्ट। तो आपकी मुलाकात कराते हैं रिचा जैन कालरा से। रिचा, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। रिचा हैज स्टार्टेड एन वेंचर जो कि बहुत से जर्नलिस्ट सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं है, एंड दैट इज अच्छी खबर देना। रिचा, अच्छी खबर क्या है और एंड व्हाई डिड यू थिंक अबाउट इट? व्हाट वाज योर मोटिवेशन? Good morning, everyone. A special hi to all the members of AWI. And Anjali, thank you for inviting me and having me over. You said the right thing. बहुत सारे and before I speak a lot, pardon me for a hoarse voice. I have a bad throat. होर्स वॉइस इज ऑलवेज गुड फॉर लाइव्स, आई मस्ट टेल यू। हाँ, वो एक वो आ जाता है, बेस आ जाता है आवाज में। So yes, why did I choose to do what I'm doing? So I'm running a digital good news platform called Achchi Khabar, which if you haven't heard of, you must visit. And why did I do this? I have been an anchor of national television for over 18 years, and I completely enjoyed it with Anjali at NDTV. But there was this inner call of doing something that is positive, that is more meaningful, and something that leaves a positive impact on the society. We all know what is the current status of news. I don't want to comment more on this. I realized that there is a strong gap to fill where people get news on the positive side of life, on the meaningful side of life. What is inspiring? मेरा ये मानना है कि आप जो कंज्यूम करते हैं वो आप बन जाते हैं, चाहे वो आपका फूड हो, आपका खाना हो, आपकी ड्रिंक हो, आपकी मेडिसिन हो, आपके थॉट्स हो, या फिर आपका कंटेंट। यस, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं डे इन या डे आउट, उसका बहुत गहरा असर पड़ता है आपके दिमाग पर, आपके सोचने पर, आपके एटीट्यूड पर, और उसी से तय होता है कि आप क्या एक्शन लेते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। So the content you consume makes who you are to a big extent, whether you like it, whether you admit it or not. And the kind of content that we receive on our phones, on our desktops, everywhere on our in our lives is, we all know what kind of content. So I felt that there is a big gap to fill where I could provide that good news, inspiring news that you would like to come back to every day. कि हाँ, दुनिया में कुछ अच्छा भी हो रहा है, दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिससे मैं इंस्पिरेशन ले सकती हूँ, इसीलिए पता चले कि हाँ, life is not that bad and grim. There is a bright side of life. So this is what we are trying to do and build at Achchi Khabar in a nutshell. बट रिचा, कोई ये भी कह सकता है कि ये ब्राइट साइड ऑफ लाइफ ढूंढने में आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया? आप इतने साल से, 20 साल से भी ऊपर हो गया, आप काम कर रही थी, तो पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों सोचा? I think जब जागो तभी सवेरा. Yes, that's a valid point. मैंने अपनी एंजॉय किया, लेकिन इस पॉइंट पर आने में where I take that decision, it's a very bold decision to leave your zone. I was doing very well in what I was doing with NDTV and media, but it takes a lot of guts. It takes a lot of willpower to leave your comfort zone and do something unexpected, something that you have not thought of earlier, something that you've not done earlier, from television to digital. Now I'm in the digital space. So it's not that I took a lot of time to decide, but it was, like you said in the beginning, it was more an inner call that I need to do something more purpose giving. कुछ ऐसा भी मुझे लगे कि हाँ, उससे मैं ना सिर्फ मीनिंगफुल बल्कि सैटिस्फाइड लाइफ भी दे सकती हूँ खुद को। और yes, I can leave a positive impact on the society. I can give back to the society. So this is what happened once I
रिचा, आपका थोड़ा सा ऑडियो अब चला गया है। हेलो। हाँ, अब आया। तो आई थिंक 18 साल जरूर लगे, बट शायद हम किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको रियलाइज होता है कि चेंज हो डायरेक्शन, यू नीड टू चेंज व्हाट यू डूइंग टू ग्रो। तो मैं तमाम को यही कहती हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है और आपको लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो डू थिंक अबाउट इट। आई डोंट से बी कंफर्ट जोन ऑल ऑफ द टाइम, बट डू थिंक अबाउट इट एंड दैट माइट हेल्प यू। थोड़ा सा आपका ऑडियो कट रहा है। आई जस्ट मे बी इफ यू डूइंग इट फ्रॉम द फोन, इफ यू कुड जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड। कभी कभार Yes, ये होता है I think हाँ, I am holding it in my hand now. Is it better now? हाँ, इट्स बेटर व्हेन यू कीप इट क्लोजर। देन आई थिंक हाँ, वो माइक थोड़ा सा कैच करने में वो डिप कर रहा है बीच बीच में। रियली सॉरी अगर ऐसा हुआ है तो, बट आई थिंक अब शायद बेटर हो जाए। मैं आई टेकन इट अब अब नाउ। perfectly आ रहा है। So we are getting these comments also, and most of the people feel that this is a very great initiative, and I think you're right, there was a gap, and उसको fill करने के लिए हमने ये भी देखा है कि कुछ बड़े मीडिया चैनल्स ने भी कोशिश की है, लेकिन वो उसको अलग ही ट्विस्ट दे देते हैं। तो कितना जरूरी हो जाता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया जो आ गए हैं, वो इंडिपेंडेंटली जो काम करते हैं, और आप लोगों के ऊपर आपके प्रेशर्स क्या है और आपके प्रेशर्स क्या नहीं है, ये भी जानना चाहिए। जो प्रेशर्स नहीं है पहले मैं वो बताती हूँ। हाँ, हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रेशर नहीं है। थैंकफुली आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल लीनिंग राइट और लेफ्ट, सो आई एम That I can vouch for. That I can vouch for. That Richa, because I've worked with her, we've anchored together. She is मतलब आप पर्सनली भी नहीं पता लगा पाते हैं। मेरे ख्याल से उसको पता होगा मेरी लीनिंग्स क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता कि रिचा की लीनिंग्स क्या है। So thank you so much, Anjali. So yes, we are not politically biased towards any particular ideology. We are only biased towards positive news, whether it's from India or it's from any part of the world. So that is the only bias that we have. And एक और pressure जो नहीं है वो ये है कि we are patient. We are not in a big hurry to be massive, because this is something that I started a few months back. So I know it will take time. So वी आर नॉट हैविंग दैट प्रेशर कि नहीं हमको आज ही मल्टीप्लाई करना है, हमको आज ही स्केल अप करना है। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू डू दैट एंड वी आर डूइंग इट इन आवर ओन वे। सो वो एक प्रेशर नहीं है। एंड जो एक एडवांटेज आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। आपने कुछ और भी पूछा था। मैंने कहा प्रेशर्स क्या है और प्रेशर्स क्या नहीं है। प्रेशर्स क्या है? यस, एक प्रेशर ये है कि हाँ, since it's a lean team that I work with, so a lot of things that were earlier taken care of by different members of team in electronic media, now you have to do on your own. So और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, डिजिटल में जितने भी लोग काम करते हैं ज्यादातर लोगों के लिए है। यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग टू अ लार्जर एक्सटेंट। सो प्रेशर ये है कि yes, good content. Like you said, some channels did start, but their content go haywire because of the content. So we are very particular about the content that we dish out, that it has to be of that quality that yes, it makes a difference, it makes you feel good. So that is definitely one thing that we get pressured about sometimes, that yes, we have to give good quality, amazing content day by day. It should not be regular. And of course, resources are another thing, but I think going forward, everything will be sorted out, because as the numbers grow, as people join to this movement, I call this a movement, a good news movement. So I'm sure as people join this movement, things will be smoother, and थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी। शुरुआत में से नंबर वन, डे वन से ही सब कुछ अच्छा नहीं होता किसी भी वेंचर के लिए, बट आई एम एंजॉइंग इट एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस विल वर्क इन फ्लरिश। आपने जो बात बोली कि सब कुछ खुद करना पड़ता है, वो बात सही है, लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन भी मिलता है मेरे ख्याल से उसमें भी कोई बांटता नहीं है। दैट सेटिस्फैक्शन इज आल्सो योर्स। सो आई थिंक दैट इज वन बिग प्लस पॉइंट ऑफ सीइंग दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रो। ये भी आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जो एक आप कह रही हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना काम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, आपको लगता है कि जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं डिजिटल के थ्रू, क्योंकि टीवी की आपको पहले से आदत रही है, वहां पर आपको उसकी रीच का पता है, डिजिटल में व्यूअर के साथ इंटरेक्शन कैसा रहता है? आई थिंक मेरे केस में मुझे उसका फायदा मिला है, बिकॉज a lot of people have followed me on television. So
वो रिलेट कर पाते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते वो कंटेंट के बल पर। और पहले मेरी कोशिश थी कि मैं कैमरे के पीछे ही रहूं एंड लेट द कंटेंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट नाउ वी मिक्सिंग बोथ। सो आई थिंक व्यूअर को अच्छा कंटेंट चाहिए, एंड दीज people today, especially Gen Z that we call, they're very impatient. So they want everything in a jiffy. So you give them good content, top class content in less duration. I think it works. They're more responsive than on television, because this is, I would say, this is the time of digital. Even all the electronic media, print media, everybody is on digital, and digital has the higher consumption. And going forward, this is also the future. That is true. Digital is the future. इसमें कोई शक नहीं है. हाँ, we can see that with the number of phones being bought, internet penetration in India. आप ये देख रहे हैं, ये साल दर साल बढ़ रहा है. और जिस तरह का पुश सरकार का भी रहा है, I think उसके बाद digital will become even bigger. Lastly, जाते जाते रिचा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म बस एक न्यूज गिविंग प्लेटफॉर्म ही रहेगा? क्या आप इसके बारे में कुछ और भी सोच रही हैं और इसके साथ कुछ और भी ऐड करेंगी? क्या होगा? अंजलि, एक अच्छा सवाल है. वी डू नॉट एस्पायर टू बी जस्ट अ पब्लिशिंग डिजिटल मीडियम. नो, we want to be an impact platform, and we have started this as well. So we started something called Achchi Initiative, in which we support good causes. So for example, I would like, in a short time, I would like to tell you, there's this para athlete called Garima Joshi, and she was struggling to finance her sports trip for Para Asians, where she will get categorization to play for India in Paralympics. So I got a call from one of my acquaintances that, you know, this girl needs some help. So I said, okay, let me see what I can do. So what I did was I put it on my social media, and I was surprised by the kind of responses that Achchi Khabar got for this girl. People whom I did not even know, वो आगे आए ये कहने के लिए कि हम गरिमा को support करेंगे. And we raised more than 1.25 lakhs for Garima. She needed 4 lakhs. So we were, very happy that we could contribute some part of it. And now she is in Italy right now, competing to get her categorization. And she is a podium finish athlete. So we are very hopeful that she would bring back some laurels. So this is just one example of what we aspire to be. We want to give back to the society, and we want to connect the dots of the goodness universe like I see it. Okay, this is basically news that is actually physically you can see the impact of in your world. So this is something, ये मुझे याद है क्योंकि शुरुआत में हम लोगों के देखने को मिलता था, लेकिन अब क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको एक डिपेंडेबल सोर्स से जब वो आता है तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, then it always is a good way to go forward. Richa, best of luck. We hope your digital platform grows, your impact initiative becomes even bigger. Thank you very much for speaking with us. Thank you so much, Anjali, for inviting me and giving me a space to speak to your community. All the best to everybody around. Take care. Thank you so much. Bye. Bye.